Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, everyone. I'm sure I'm audible and the screen is there. So how are you? Everybody's fine, mashallah? Okay, that's very good. Okay. All right. Okay, so we have basically in today's meeting, we have two agendas. The first one is definitely we are going to have our mock interviews, but with mock interviews, let me inform you, inshallah, we will discuss some highly important question and the most important in the sense because these questions been the part of a lot many interviews. So we're going to discuss the questions from the 18th century. So 18th century is important not only in the sense that this century is a bit different century. It's a century that is considered the age of pros and reasons. So we have a lot many different factors here. I'm talking about the ancients, obviously the new classicists who've been following the people, the rules laid down, demarcated by the ancients. And then we have the Augustus age. So all the questions that been the part of previous interviews from this age will be discussed, inshallah, in today's session. Not only this, we will try to find out the most appropriate answers of these questions. Remember one thing, before proceeding further and embarking upon the journey of today's discussion, let me share two important things with you. The first thing is that whenever you answer any question in your interview, for example, you are about to answer a question about Pope from a specific age, you need proper references. References mean you need to justify your arguments there. You need to justify your answer. If you're just speaking something in the air, if you're just building the castles in the air, you are not going to get anything. So when I share answers with you, I always try to share the most important ideas, references, and those points that you can expand easily. So do not speak, do not talk about, do not go for an answer about which you're not sure what to say and how to end that answer in justified manners. Okay, so we will definitely discuss the questions, but proceeding further, we have Miss Mahin with us. Let's move on and proceed further with our first interview. Miss Mahin, please write yes in the chat box so we may take you on board for interview. Miss Mahin. Okay, so yes, she is there. Good. You may unmute yourself, Miss Mahin. I have requested you. You can unmute yourself, Miss Mahin. I have allowed you to open your mic. Meanwhile, we are waiting for Miss Mahin. Okay, I am unable to unmute. Okay, so आपके सामने जैसे हम क्लिक करते हैं, अभी आपके आवाज ऑप्शन नहीं आ रहा कि आपको जो है वो अनम्यूट करने के लिए कहा जा रहा है. जिस तरह से हम आयशा खान को भी देखते हैं अनम्यूट करने के लिए, आयशा के पास ऑप्शन आया होगा चेक करने के लिए सिर्फ जो है. गुड. यस सर. अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसे हैं आप? आई एम श्योर दैट यू आर फाइन. आयशा ने बंद कर दिया बट वो वर्क नहीं कर रहा. ऑलराइट.
अच्छा, मीनवाइल आप अपने माइक को चेक कर लीजिए मिस माहीन, हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलेंगे। हम अपने उन क्वेश्चंस को जो कि 18th सेंचुरी से पिछले इंटरव्यूज का पार्ट रह चुके हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। और आज हमारा एक ही इंटरव्यू स्केड्यूल है, बिकॉज हमारे जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, उनकी कोई जेन्युइन रीजंस हैं। तो अब हम उन्हें देखेंगे कि अगर मुमकिन हो सका तो हम कोई लेटर ऑन स्लॉट में उन्हें जरूर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, जैसे हम इन इंटरव्यूज के सेशन में आगे बढ़ते चला जाएंगे और जैसे ही हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें हम करंट अफेयर्स पे स्विच हो जाएंगे। हम उन ऑर्गेनाइजेशंस पे बात करेंगे जो कि इससे पहले इंटरव्यूज का पार्ट रह चुके हैं। डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए एफएटीएफ का, आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस का, आपको पता होना चाहिए हमारे जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम का। वो तमाम चीजें जिन पर चेयरमैन साहब जो हैं, आप जानते हैं कि इंटरव्यूज के अंदर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 3 तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो लोग जो कि इससे पहले इंटरव्यू का हिस्सा रह चुके हैं उन्हें तो इस चीज का बखूबी इल्म है, लेकिन जो चीज जो है, जो पार्टिसिपेंट इससे पहले नहीं रहे या जो रहे भी हैं, उनको भी शायद इसकी इंटरनल डिवीजन का नहीं पता हो। चलिए, कुछ अंदर की बात है, उसके बाद जो है वो हम ये 18th सेंचुरी से क्वेश्चंस को देखेंगे। याद रखिएगा, आपका इंटरव्यू जो है वो नॉर्मली 3 और इन रेयर कंडीशंस 4 पीपल पे होता है। अब इनके अंदर जो होता है, क्योंकि लेक्चर की पोस्ट एक ऐसी पोस्ट होती है कि इसके अंदर साइकोलॉजिस्ट की जरूरत कभी कभी नहीं भी पड़ती है, तो वो इसको स्किप कर देते हैं। आपके 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो कॉल किए जाते हैं। और यहाँ पे ये बताना भी जरूरी है कि ये वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जिनके अपने रेलिवेंट फील्ड के अंदर 10 इयर्स परमानेंट जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मिनिमम वो बीपीएस 18 या प्रेफर किया जाता है कि 19 पे हो जाए, लेकिन नॉर्मली 19 वाले बंदे विलिंग नहीं होते हैं, तो 18 तक जो है वो लोग जाते हैं। क्योंकि ये एक हैक्टिक प्रोटीन होती है सारा दिन अटेंड करना। और 19 पे जो लोग होते हैं उन्हें हम एसोसिएट प्रोफेसर कहते हैं, 18 वाले असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। तो फिर जो है 19 वाले कम ही जाते हैं और प्रोफेसर तो बहुत कम ही जाते हैं। सो जी, SS1 और SS2 जो हैं, ये नॉर्मली ऐसा भी होता है कि जो करीबी यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां से लिए जाते हैं या HED से लिए जाते हैं। HED आप जानते हैं कि 2 पार्ट्स में मुश्तमिल होता है, क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो HED में एक सेक्शन जो होता है वो यूनिवर्सिटीज को डील करता है और दूसरा जो है वो कॉलेजेस को डील करता है। सो इन दोनों सेक्शन से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो है वो हमें अपने कंसर्न फैकल्टी मेंबर्स से दीजिए, जो कि फिर इसके लिए आमादा होते हैं, वो रिक्वेस्ट जो है भेजते हैं। हमारे जो मतलब की चीज है वो यहाँ पे है कि ये जो SS1 है और SS2 है, ये सिर्फ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे आपकी डोमेन के बारे में, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है। डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट योर इंग्लिश। सो इंग्लिश के बारे में ये क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। इंग्लिश के बारे में जितने क्वेश्चंस होंगे ये पूछेंगे। अब इनको आप अपनी मर्जी से डील कर सकते हो, ये नहीं पूछेंगे आपको जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसके बारे में नहीं पूछेंगे, ये आपसे इकोनॉमी के बारे में नहीं पूछेंगे, कुछ किसी और चीज के बारे में ये नहीं पूछेंगे। लेकिन ये जो चेयरमैन साहब हैं जो बैठे होंगे दरमियान में, ये PPSC के चेयरमैन नहीं है, ये उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। इनके पास 50 मार्क्स होते हैं आपके, जो है ना, जो इन्होंने 100 में से आपको देने होते हैं 50 मार्क्स। और एक बड़ा आजकल र्यूमर चल रही है कि PPSC ने एकेडमिक्स का स्कोर चेंज कर दिया है। PPSC अब 20 मार्क्स पे आ गया है, PPSC 40 पे था पहले। सो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि PPSC जब भी कोई चीज कम्युनिकेट करती है तो सबसे पहले उनकी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाता है। सो डू नॉट गो फॉर एनी पीस ऑफ न्यूज until unless you have the notification of that particular पोस्ट। तो जी, 50 मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह से होती है कि चेयरमैन साहब ने इसको भी डिवाइड किया होता है। 10 मार्क्स आपके होते हैं कि व्हाट यू नो अबाउट योर ओन एरिया, आपके अपने एरिया के मुतालिक आपको क्या पता है, सिटी के बारे में क्या पता है, वहाँ पे जो नोटेबल्स हैं उनके बारे में आपको क्या पता है, आपकी जो अगर सिटी कोई मेन सिटी है पाकिस्तान के GDP में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में वो पूछ सकते हैं। आपके जो अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, नोटेबल्स में यदि आ जाता है तो उनके बारे में, जिस तरह से अगर कोई सियालकोट से है तो सियालकोट में आपको पता है कि फीफा को वर्ल्ड कप जो है वो वर्ल्ड कप के लिए जो फुटबॉल इस्तेमाल होता है वो भी सप्लाई सियालकोट से होता है। तो ये पूछा जा सकता है। तो जो चीजें होती हैं एरिया आपकी स्थिति के मुतालिक जो है वो दिए जाते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं है कि उनके पास उन्होंने रैंडमली क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं।
अगर वो ये चाहें तो जिन 20 या 30 लोगों का उन्होंने इंटरव्यू करना होता है, उनकी प्रोफाइल जो है एक दिन पहले शेयर कर दी जाती है, जो उनके पास कॉपीज होती हैं, जो आपने एट द टाइम ऑफ पीपीएससी में रिटर्न आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवाते हो ना, जिसमें रिटर्न एप्लीकेशन आप जब देते हो पीपीएससी में, तभी वो जो है वो यहाँ से इंफॉर्मेशन ले चुके होते हैं। और यही वजह है कि पीपीएससी जब भी आपको इंशाल्लाह जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिटर्न रिजल्ट आएगा, तो पीपीएससी आपको मैसेज भेजेगा आपके उसी नंबर पे, कंग्रेचुलेशन कि आपने रिटर्न पास कर लिया। तो और इसी तरह से जब आपकी फिर फाइनल एलोकेशन हो जाएगी, फिर भी बीपीएससी आपको भेजेगा। और आई एम श्योर कि आप इस मैसेज का इम्पेशेंटली वेट कर रहे होंगे, कंग्रेचुलेशंस यू हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर दिस। तो ये मैसेजेस जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं। तो जी उनके पास प्रोफाइल होती है, फिर वो आपसे, उनको पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो 10 मार्क्स तो आपके यहाँ पे आगे, जो चेयरमैन के पास 50 मार्क्स हैं, उनकी डिवीजन इस तरह से। अच्छा जी, अगले जो 10 मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपकी हॉबीज के मुतल्लिका और इन चीजों के मुतल्लिका कि आप जो हैं वो करते क्या। मिसाल के तौर पर अगर कोई अपनी बुक रीडिंग वाली हॉबी है, ये सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, इसके बारे में डेफिनेटली चेयरमैन साहब जब पूछते हैं क्वेश्चन तो ये वेरी कर सकते हैं। हॉबीज और आपकी जो रूटीन होती है, लाइक व्हाट डू यू डू, आप जो बुक पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको कितना पता है, सारी की सारी चीजें, ये जो है इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिटेल्स, जिसमें आपके मुतल्लिक डिटेल्स तो हैं, लेकिन इसमें आंसर्स जो होते हैं वो आपके सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है जी, 10 मार्क्स आपके यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, रिमेनिंग जो 10 मार्क्स हैं, ये अब वेरी कहते हैं कि या तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में हो सकता है या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में हो सकता है। मिसाल के तौर पर मुमकिन है कि आपसे जो है वो पूछा जा सकता है पाकिस्तान के किसी भी इदारे के बारे में जो चल रहे होते हैं, ऑन गोइंग चीजें जो है वो जो मूव ऑन कर रही होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई फार फेच एरियाज का मुतल्लिका पूछा जाता है। कुछ ऐसी, जिस तरह से आजकल की अगर आप पॉलिटिक्स की बात कर लें, तो जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तब्दील हो रही है, जिस तरह से सारी की सारी चीजें चेंज हो रही हैं, या गवर्नमेंट या इंडिया के अंदर जो है 24 जुलाई को उनके प्रेसिडेंट जो हैं उनका टेन्योर कंप्लीट हुआ, 25 जुलाई को नई प्रेसिडेंट उनकी आ गई। इस तरह से ये जो नेशनल इंटरनेशनल पीसेस ऑफ न्यूज हैं, इनके बारे में आपसे जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा जी, 20 मार्क्स जो होते हैं ना लेटर ऑन, ये डिपेंड करते हैं अब आपकी अपनी फिजिबिलिटी पे कि आप उनको किस तरफ लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने उनको इन 3 सेक्शंस में से ही इतना इतना सब्जेक्टिवली लीड कर लिया, तो ही इज नॉट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस जो सेपरेट नहीं होंगे। वरना वो क्या करेंगे कि ये जो 20 मार्क्स हैं ये डिवाइडेड होते हैं आपके एप्टीट्यूड की तरफ। आपसे अगर आपने बुक हॉबी बताया है, तो हॉबी जो है उसी से ये लीड करते हैं। कोई बुक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बता दिया जी आई एम इंटरेस्टेड इन अर्नेस्ट हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी, तो अब अर्नेस्ट हेमिंग्वेज से बातें निकलेंगी और वो निकल के कहीं भी जा सकती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्टिंग जो है। तो ये हमारे पास 20 मार्क्स है। अच्छा जी, ये जो मार्क्स हैं चेयरमैन साहब के पास 50 मार्क्स में फिर वो अवार्ड करते हैं इसमें से। अब चेयरमैन साहब जो हैं अगर आपको दे देते हैं 50 में से 40 मार्क्स, तो बाकी जो हैं SS1 और SS2 भी तकरीबन एक जनरल सी रूटीन यही है, वो इसी को जो है वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो है इसको किस तरह से फॉलो किया जाता है। अच्छा जी, वेरी गुड जी बिलावल साहब, आपने चैट बॉक्स में सबकी आसानी के लिए लिखा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा जी, SS1 जो होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 1 या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2, इनके क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। हमारे हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जो कि कॉलोनियल माइंडसेट है हमारा, बदकिस्मती से, जहां आज भी अंग्रेजी के अंदर बात करने को आपने सुना होगा कि जहानत का एक मयार समझा जाता है। और शायद एक ऐसे कुछ इम्तहानात ऐसे होते हैं कि जिनको पास करने के बाद ये समझा जाता है कि इनकी मेंटालिटी बड़ी सुपीरियर है। आई एम टॉकिंग अबाउट CSS एंड PMS एंड ऑल दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स। तो हमारे पास ना एक जनरल ट्रेंड पिछले सालों में कुछ ये चलता आया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ईयर। SS1 जो है, अगर उन्होंने 40 मार्क्स दे दिए चेयरमैन साहब ने, तो इन्होंने देखा कि हमारे पास दोनों SS के पास 50 होते हैं, ये उसके हाफ हाफ नंबर दे देते हैं कि जी चूंकि चेयरमैन साहब ने इतने नंबर दे दिए हैं, तो हम भी जो है वो इतने ही देंगे कि इनसे बेहतर तो हम इवेल्युएट नहीं कर सकते। और ये बात जो है डेफिनेटली बिकॉज द पीपल हु आर देयर who are interviewing the people, they are from my department, जो हमारे डिपार्टमेंट से हैं, they know all the facts and figures। लेकिन कुछ केसेस ऐसे बहरे कैफ मौजूद हैं, यानी कि
अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि कैस्टिंग वोट जो है वो चेयरमैन साहब के हाथ में होता है, तो ये बात गलत नहीं होगी कि अगर आपके चेयरमैन साहब जो हैं वो आपके इंटरव्यू से खुश हैं तो आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। और अगर चेयरमैन साहब जो हैं वो मुतमिन नहीं है और बाकी दोनों मेंबर्स दोनों ही मुतमिन हो गए हैं, तो शायद स्कोर को बहुत अच्छा नहीं आ सकेगा। आई एम श्योर कि यू आर गेटिंग द पॉइंट। अच्छा जी, अब इसमें होता यह है कि SS1 और SS2 जो है वो इवेल्युएट करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे, जिस तरह से अक्सर इंटरव्यूज में मुशाहदे में आया, देखने में ये आया कि व्हेन द पर्सन वाज मेंशनिंग कि आई एम इंटरेस्टेड इन अर्नेस्ट हेमिंगवे, तो मैं अर्नेस्ट हेमिंगवे की इस राइटिंग में जो है वो मैं दिलचस्पी रखता हूँ। तो SS1 ने फिर जब चेयरमैन ने क्वेश्चंस किए अपनी हॉबी के बारे में, SS1 ने उसी हॉबी से जो है वो क्वेश्चंस को विड्रॉ करना शुरू कर दिया, उसने उसी से जो है वो क्वेश्चंस को निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब आप अपनी हॉबीज को कर रहे हो ना, जब आप अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो आपने रैंडम मूव नहीं करना है, आपने ऐसी शॉट्स नहीं खेलनी है जिसमें आप जो है वो कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड होना चाहिए आपका सारे का सारे इंटरव्यू, कि जिसमें हर चीज जो है वो एक मजबूत सिस्टम की तरह हो, हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हो। ठीक है जी। सो SS1 और SS2 के जो हैं दोनों मिलके आपके जो है वो इंटरव्यूज को मूव ऑन करते हैं और बेहतर तरीके से इसको जो है वो लेके चलते हैं। सो SS1 और SS2 जो है ये डिस्कशन करते हैं जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट की डिस्कशन जो है वो चलती है। 3 से 4 मिनट की डिस्कशन जो है वो चलती है, और 3 से 4 मिनट की जो डिस्कशन होती है, they are just going to decide all the things there, like what to avoid and how to avoid. देखिए हम अपने पहले सेशन में तमाम चीजों को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लाइक व्हाट टू डू बिफोर इंटरव्यू, व्हाट टू डू इन इंटरव्यू एंड व्हाट टू डू आफ्टर इंटरव्यू। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम कहते हैं बिहाइंड द स्क्रीन मूव ऑन कर रही होती हैं। सो दीज थिंग्स आर देयर बट दे आर बिहाइंड द स्क्रीन। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो है आफ्टर दीज कंसेक्टिव क्लासेस वी विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द थिंग्स, जिसमें हमने जो है लिटरेचर को भी समझ लिया, लिंग्विस्टिक्स को भी समझ लिया, और आपने उन चीजों को समझ भी लिया, लेक्चर्स भी ले लिए, मॉक इंटरव्यूज को भी अटेंड कर लिया। जो हमारा डिफिकल्ट पार्ट है वो हमारा होगा कुछ इंस्टीट्यूट्स को समझना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेके चलना जो कि इससे पहले वाले इंटरव्यू का पार्ट रह चुके हैं। कि आपने मिस्टर चेयरमैन वाला जो सेक्शन है, हमने जब मॉक इंटरव्यूज को कंप्लीट कर लेंगे, हम अपने चेयरमैन वाले जो क्वेश्चंस हैं जो इससे पहले इंटरव्यूज का पार्ट रह चुके हैं, हम उनको ही एक जो है रूटीन में देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि हम उनको किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी। प्लीज चेंज द टाइम, आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन। अच्छा फातिमा, जब भी कोई डिस्कशन होती है जस्ट गिव मी सम टाइम, मुझे रिकॉर्डिंग को यहाँ। ओके जी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स कि हम इन चीजों को जो है वो देखेंगे, वन बाय वन करने की कोशिश करेंगे। अभी हम इन तमाम चीजों को एक दफा डिस्कस करने के बाद अब हम जो है वो कोशिश करेंगे कि मिस माहीन जो है उन्हें ऑन बोर्ड ले लें उनके इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करें। अगर मिस माहीन अभी भी ऑडिबल नहीं होंगे तो फिर हम अपने क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करना शुरू कर देंगे। मिस माहीन काइंडली अपने माइक को ओपन करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप अभी जो है वो कर सकें। गुड, आपका माइक ओपन हो चुका है। सो मिस माहीन, वेलकम टू मॉक इंटरव्यू सेशंस। हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you? I'm perfectly fine. Thank you so much. Okay, see, I'm pasting all the things in the chat box. In case you want to download or in case you want to copy them, you may go for that. Okay, so Maheen, formally speaking, we are going to proceed further with our interview. I'm sure that you're ready for that. Okay. Yes, sir. So Maheen, would you like to give us your introduction, a formal introduction? Yes, sir. My name is Maheen and I'm an overseas Pakistani. And I have completed my Master's in English Language and Literature from Punjab University in 2021. And I have completed my graduation from Government College People's Colony, Gujranwala, and from intermediate from Government Postgraduate College, Secretariat, Gujranwala, and I also belong to district Gujranwala. All right. So Gujranwala, a very famous city. Do you know a Yes, very sir. famous personality from Gujranwala who was
Pahalwan, a very famous name. You know, Gujranwala is known for the city of those people Yes, as well. So city what of was the wrestlers. Oh Yes, yes. sir. There are many, but I know two of them. Mm-hmm. The first one is Yunus Pahalwan, who is known as the Sitarai Pakistan, and the second one is Acha Pahalwan, who is known as the Shere Pakistan. Oh yes, that's absolutely right. By the way, there is another personality who was definitely not from Gujranwala, but he was very famous. Who's Gama Pahalwan? Those are from Gujranwala, and that is the city of the wrestlers. So do you know Gama Pahalwan? No, sir, I don't know. Okay, all right. So Gujranwala is basically a division having a lot many districts in it. So how many divisions are there? How many districts are there in Gujranwala? Sir, like Wazirabad, like this. Districts. How many districts are there in Gujranwala? Wazirabad is a tehsil of Gujarat, na? Sorry, sir, I don't know. No worries, no worries. So, Gujranwala is a very popular, very famous city. Why it is still considered a modern town, modern city, as compared to the other cities of Punjab? Definitely, whenever we compare it with Rajanpur, with Bahawalnagar, with Multan, the Gujranwala is considered a modern one. So, any two modern things that you want to mention? Sir, because of the education, like the university. What is the contribution of Gujranwala in the GDP of Pakistan? Sir, Gujranwala is the third industrial center, contributes Oh about 5 yes, to 9% in national GDP. oh yes, that's perfectly fine. Yes, it is. I remember if you have attended at the previous interviews, there was a term that we used and that is golden triangle. I'm sure that you have heard about Yes, sir. Gujranwala as well. Mm-hmm. Yes, sir, that is about Sialkot, I guess. Gujranwala is The also a term. part of that. Mm-hmm. Okay, So all right. it connects three cities like Lahore, Islamabad, Mm-hmm. and it was like this. So, how many universities are there in Gujranwala? The Punjab University, Gift University, and Mm-hmm. University of Central Punjab, and Oh yes. Superior University. Mm-hmm. That campus is not functional anymore, I think. Uh, yes, sir. The last question about your city. What is the literacy rate of Gujranwala? So 70%. Yeah, you're quite close to it, but you need to check it maybe. Okay. So, talking about your city, so हमने कुछ परिंदों के बारे में सुना है कि वहाँ के खाने पीने में बड़े मशहूर होते हैं. Like whenever we talk about Gujranwala, is it true? And by Yes, the way, sir. these questions, they've been the part of the previous interviews for the rest of the fellows who are from Gujranwala. Whenever you're going to mention your cities, you need to mention and need to remember some foods about your city. और वहाँ Yes, पे कुछ sir. और भी बड़े मशहूर हैं. The Yeah. city Please, is please, please. mainly known for its food, like chide, bate, siri pie, and known for sweets like Mm. gulab jamun, rasgulle, and a famous drink lassi. Okay, so maybe you're going to distribute those gulab jamuns and male sparrows when you will be successful, inshallah. Okay, talking about your education. So you haven't attended any university. Your master's is as a private candidate No, sir, as a regular candidate, but because from of main COVID, campus. no, sir, in Gujranwala, yeah, there is one campus here. So PUGC, that is basically the campus of Punjab University. By the way, Yes, who is yes, the vice chancellor of Punjab University nowadays? sir. Professor Niaz Ahmed Akhtar. Oh yes.
Oh yes. Just a month back, he was not the vice chancellor. Why the office of vice chancellor was vacated by Professor Niaz Ahmed? No, sir, I don't know. Okay, so coming back to the literature and linguistics terms, but before that, what are your hobbies, Miss Mai? Sir, I like to read Urdu poetry and I like to play badminton. Urdu poetry. Why Urdu poetry? Why not English poetry? And if you are interested in Urdu poetry, why not masters in Urdu? Why masters in English? Why this contradiction? So, sir, when I get admission, there were not many departments. So my circumstances didn't allow me to take Urdu literature as my major. So you want to go for Urdu, but because the department of Urdu wasn't there, that's the reason you are here in English department. Is it so? No, sir, I equally interested in English literature, yeah, poetry, I can say. Okay, all right. So it means you are here by choice, not by chance. Yes, sir. Okay, Pakistan is located in South Asia, if I'm not wrong. Is it so? Yes, sir. Yes, sir. In South Asia, we have 5 major Urdu poets. Can you name any 3 major Urdu poets of South Asia? Sir, Allama Iqbal, Oh yes, yeah. Sir Faraz. Okay, major poets. When we're talking about major poets, maybe we need to talk about the giants. Yeah, Fraz is a good name, but maybe when we talk about Urdu poetry in South Asia, we may talk about the India before partition. Even the great names were there. Yes, sir, Mirza Ghalib. Mir Taqi Mir, Bahadur Shah Zafar. Oh yes, very good. Yes, Mirza Ghalib, Mir Yes, sir. Anis, and these people were there. So yes, that's true. Any Urdu poem that you remember because you've been reading Urdu poetry? So Yes, any sir. Urdu poem? Ji, sir, I can recall few lines Please, from बताइएगा. Faraz's poetry. जी जी Sir, should I recite? जी जी प्लीज हम मुंतजिर हैं आप कहिएगा. Sir, it is like कुर्बतों में भी जुदाई के जमाने मांगे, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे. हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे. यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए, अब यही तरके ताल्लुक के बहाने मांगे. अपना ये हाल के जी हार चुके, लुट भी चुके, और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे. Sir, is it okay? Should I proceed? Okay, so your perception about Fraz is good. So you have learned this poem by heart. So do you Yes. remember any other poem as well about Fraz? Sir, I can recall few verses, not whole poem. अच्छा इससे पहले कि आप जो है वो जाएं फरारी जो ये आपने लाइन बोली आप जानते हैं इसके अंदर कुछ उसने इस्लाहात का इस्तेमाल किया जिसमें आपने कहा हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते खलके शहर को कहने को फसाने मांगे. तो ये किसके तरफ रेफर कर रहा है यहाँ पे कोई इसमें अदबी इस्तेलाह है हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते या दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे. Sir, I think it is about like what we have to face in love. अच्छा इसी इनकी जो है वो नज्म से
जिंदगी हम तेरे दागों से रहे शर्मिंदा और तू है कि सदा सदा आईना खाने खाने मांगे। तो आईना यस खाने से यहाँ पे क्या मुराद है? ये सर फ्राज आपका पसंदीदा शायद है ये आपकी? जी सर जी। the things that we from which we want to escape and the life is time and ठीक है। again showing these things again and again. हम्म, अच्छा ये बताइएगा कि आपने, ठीक है आपकी बात किसी हद तक ठीक है, ये किसका शेर है? वो हीलागर हैं जो मजबूरियां शुमार करें, चिराग हमने जलाए हवा के होते हुए, ना चाहने पे भी तुझको खुदा से मांग लिया, ये हाल है दिले बे मुद्दा के होते हुए। ये फराज का ही Uh, शेर है, इसकी दूसरी गजल से लिया गया हुआ। ठीक है, चलें, टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ठीक लिटरेचर, इनफ विद उर्दू पोएट्री। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, आप फील करते हो कि इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर के अंदर बहुत फर्क है, और उर्दू जुबान के अंदर वो तरक्की नहीं हो सकी जो इंग्लिश लिटरेचर ने की, इंग्लिश अदब ने की? क्या ये बात ठीक है? yes sir, it is true Mm-hmm. So how because you going sir to justify? yes sir Urdu language didn't get uh, that importance like from our own people. Urdu Okay. language didn't get patronage, you can say. Hmm. Fair enough. Talking about your favorite genres, I think because you're interested in phrase, so you will go for novels. आपको novel अच्छा लगता होगा. Yes sir, I'll go for novel. Good. So what is the name of your favorite novelist apart from Jane Austen? Because phrase को पढ़ते हैं तो आप Jane Austen में भी interested होंगे और आप फेमिनिज्म को भी सपोर्ट करते होंगे। सो अपार्ट फ्रॉम जेन ऑस्टन आपको कौन से अच्छा नॉवेलिस्ट है? Sir, currently, so I was about हम्म to say Jane Austen. तो जेन ऑस्टन जो है, बस आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जेन ऑस्टन क्योंकि ये चीजें लिंक कहती हैं। चलें खैर, जेन ऑस्टन के अलावा कोई और आपने तैयार किया है? इज देयर एनी अदर नॉवेलिस्ट इन योर लिस्ट अपार्ट फ्रॉम जेन ऑस्टन? ओके, एनी फेवरेट पोएट? Sir, I was thinking to take Wordsworth, but I didn't prepare yet. No worries about that. That's fine. Wordsworth is a good choice. Do you feel there is any relevance between William Wordsworth and S.T. Coleridge? You know, both started a launch a new movement, but after some time they parted their ways. So, what is the point of relevance, and what do you feel where the differences started between them? So they were good friends. Mm-hmm. Uh, they were Okay. writing together. Okay. So, what do you know about lake poets? Is there any idea about lake poets? Okay, what is stream of consciousness, Musmain? Some stream of conscience is about the things that are going on in our mind. मुझे उर्दू में समझाइएगा, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है? क्लास आपके सामने बैठी है, वो जानना चाहते हैं कि ये क्या है, उन्हें नहीं पता कि ये क्या है, स्ट्रीम क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। अब आपने But अप्लाई stream, करके बताना है इस थ्योरी को। so stream of consciousness एक वो स्टेट है हमारे माइंड का, लाइक जो चीजें हमारे माइंड में चल रही होती हैं पीछे। लाइक सर करंटली मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे माइंड में चीज चल रही है कि हाउ आई परफॉर्म एंड व्हाट द रिजल्ट गोना बी। ठीक है, ठीक है। तो आप अपनी क्लास को कैसे ये समझाएंगे, किस तरह से ये समझा सकेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस?
क्या इस टेक्निक की जरूरत थी या राइटर्स ने इसको वैसे ही जो है वो ऐड कर लिया? कोई जरूरत थी इसकी? Yes, sir, it's part of human nature. हम अभी ऐसा करते हैं माहीन, आपकी यहीं पे स्टॉप करते हैं, सेशन को दोबारा ज्वाइन करते हैं. इट is going on and we are going to join this session once again. We will definitely talk about positivities and where you need improvement, and we will ask a few more questions. But for that we have to join this session again. Okay, so join Okay, this session और इस पर बात करते हैं.